Okay, Jai Hind students. So let us begin our class. 20 minutes are already passed as students are not attending online classes. Principal ma'am has also messaged just now, right? So it's a warning to all those who are continuously bunking the class and they pretend as if they are their own parents. On calling, they give the receiver to their elder brothers or sisters and they ask them to be the mothers or the fathers. So I think this technique is not going to work, especially for a with a person like me. Right. So let us continue and begin our topic. Yesterday we have covered before conversion of statements into direct speech, and I have given you the task of reading the content as well, and I'm sure that most of you might have done the reading too. So let me begin with Master Ankit Singh. Ankit, just tell us the brief. What is there in conversion of statements into direct speech? In brief, say if five pointers are written, you need not to speak all about. You can speak hardly two, only two, right? Begin. Right, right. Vivek, would you like to add one more point to it? Okay, nice. Swati Rawat, one more point from your end. One more point from your end. The two boys have already spoken about three pointers while we are converting statements from indirect to direct. This part we have already discussed yesterday, right? How changes, or maybe in before yesterday class, right? How pronouns also change. Okay, so I believe, as you have already read, let me read the pointers one more time. When changing from indirect to direct, till now, what we have seen, how to change the statement from direct to indirect, right? Now we shall see how indirect will be changed in direct. We use say, said as the reporting verb. If the reporting verb is in the past tense, we make the necessary changes in the direct speech, right? Make necessary changes in pronouns and possessive adjectives. Change words expressing remoteness. What do you mean by remoteness? If something is not in our close proximity, it is situated far away of time and place. Then next we use inverted commas to mark the exact words of the speaker. This we already know, that is what makes a direct speech different from an indirect speech, right? I like jogging in the morning. Who said? She says. So she says, I like jogging in the morning. So this itself is the indication that it is in direct speech. Why? Because there is a comma and there are two inverted commas. Yes or no? So so now we have this exercise. Rewrite the following sentences in direct speech. Now automatically these four are in indirect speech. Okay. So let us solve it, and I'll be saying the answers of top three. Last one I'll ask from a girl. So be ready. So he says that he's fond of mangoes. Okay. So now what should come? It should take comma. Where? After says. As it is, yes. So he says, correct. He says, comma. He says, comma, that will be gone. That will be omitted.
and then I am fond of mangoes. है ना? He is will be omitted and I am will take place, right? So he says, comma, I am fond of mangoes, and close this I am fond of mangoes into double inverted comma, right? Now, second one, the officer told Mr. Gupta that he should apply for a new passport immediately. So, the officer said to Mr. Gupta, told, so said to, right? Now, after, right, right. So, the officer, correct. So, the officer said to Mr. Gupta, comma, now that will be omitted, and these are my two commas, okay? The mouse is not that smooth as a, like pen. So, please do not think that I'm writing something. It is the way I'm making inverted commas. Yeah. Yashmit, be quick. So what? So on what? On which words will be omitted from this sentence? Only he. So those. So those. Yes, yes, yes. Do not make it the mathematics class. Oh my God. You people just behave like, like I was today in the class. Every day I sit here with Uzma Mama and I could see, like you people like speak and participate as if there is a marathon going on. The moment she comes and the moment she ends, till that 40 minutes of span, kach, 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 puck, 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 chuck, 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 in different modulation of voices. And if I'm reading something, I'm also in the same class. And if I'm reading something, I need to reread the same line, I think maybe 10 number of times. I cannot concentrate. So today I asked her, kindly lower down the volume because the way and you people like quite active. So there should be a way to participate also. Okay, else the teacher will be intimidated by the students, and I think the topic will be lost, gone. टॉपिक कहीं छूट जाएगा और बच्चे ही जो है लग रहा है कि मैराथन हो रही है बच्चे सब भाग रहे हैं. Right. So here, I believe those who are saying he should, firstly, it is incorrect. If you remove he should, then the sentence sense will be totally changed. So here, only you should come in the place of that he. Right? You should apply for a new passport immediately. Okay, the officer said to Mr. Gupta, comma, now double inverted comma begins. You should apply for a new passport immediately. Am I clear? Hmm. Any? What is the strength of class right now? All right, thank you. Now, Garima told me that her father had gone out on tour and would return the following week. So Garima said to me, my father now said to me, comma, and after comma, double inverted comma begins. My father had gone out on tour and will return next week. Following week का क्या हो जाएगा? Next week. Okay, right. Now, Minnie said that she wanted to go to a hill station that week. Nobody will say the answer. I would like some girl. Satya Rani. Today you are an absentee in my class. You know. Chalo, tell me the answer.
अच्छा, why do you think told will come? एक तो सत्या, your face is not visible. You sit towards the rays of the light. From which source the light is coming? Move your face towards the light. Towards the light. Change, change, change. तो देख ही रहा है, दिख रहा है कि आपने, आप लोगों ने मोबाइल, कोई आप लोगों के घर में जगह नहीं है। हाय रे, कितने परेशान रहते हैं आप लोग। कोई जगह ही नहीं है कि आप लोग एक फिक्स करके बैठ सके। यहाँ आपको क्यों लगता है बेटा कि यहाँ पे टोल्ड आएगा? कुछ भी आप पढ़ नहीं रहे हो, ना ही आप लोग वीडियोस देखते भी हो। मेरे दोनों वीडियोस देखो, आपके आंसर से साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ ना? वेरी गुड। तो अब यस मैम है। तो अब इस क्लास को तुम लीव करो और तुम मेरे चैनल पे जाओ, और मेरे दोनों जो स्टार्टिंग के, जो मैंने कब डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है? हाँ, हम टोल्ड कब बोलते हैं? टोल्ड तो हम तब यूज करेंगे ना जब कोई किसी को बता रहा है, किसी को कोई बता रहा है। जैसे कि ठीक इसके पहले वाले एग्जांपल में, गरिमा सेड टू मी, वहां पे क्या है, क्या लिखा हुआ है बुक में? पढ़ो। गरिमा किसी को बता रही है। किसको बता रही है? मुझको। मुझको कौन है? द स्पीकर। यहाँ पे कोई है क्या? मिनी के साथ कोई है क्या? तो तुम्हारा रिवीजन और पढ़ाई सब जीरो चल रहा है ना? तो उसको ध्यान से पढ़ना है। सिर्फ मैम को या पेरेंट्स को या स्कूल के डर से नहीं करो, खुद के लिए करो तुम लोग। सो मिनी सेड आई वांट टू गो टू अ हिल स्टेशन दिस वीक। ठीक है। मिनी सेड, ठीक है, देन कॉमा, शी वांटेड, सो आई वांट टू गो टू अ हिल स्टेशन दैट वीक का क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। Conversion of commands requests into indirect speech. How do we change a command and a sentence of request in indirect speech? भाई indirect speech तो ऐसी speech है जिसमें कि कोई भी commas, कोई भी inverted commas, कुछ भी नहीं आएगा, है ना? So how do we make necessary changes in these kinds of sentences? Imperative sentences like commands, requests, statements, giving advice are changed into reported speech by the following given steps. The verb of the reported speech is changed into an infinitive. सबसे पहले तो जब ऐसे sentences आ गए, आपको दिख गए, shut up, leave the class, bring a glass of water, open the door, get lost. तो आपको डायरेक्ट स्पीच को पढ़ लेना है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और उसके हिसाब से ही आपको पकड़ना है कि ये क्या हो रहा है भाई। इफ दिस सेंटेंस इज ऑफ दिस काइंड, इम्पेरेटिव है, ठीक है। यहाँ पे कमांड और रिक्वेस्ट का मतलब है कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। ठीक है। सो आपको समझ जाना है, आपको समझ जाना है कि भाई ये तो मेरा हिसाब, नेक्स्ट व्हाट शुड बी माय स्टेप। सो ही ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो नाउ। सो इफ ही सेड ओपन द विंडो, इट मींस ही इज ऑर्डरिंग समबडी। सो वर्ब क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच का? सेड की जगह किस में हो गया? ऑर्डर में। ठीक है। अब क्या बोल रहा है रूल? रूल बोल रहा है दैट द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू एन इन्फिनेटिव। अब ओपन यहाँ पे, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव है कि नहीं है? अंकित स्वेन, आपका माइक है खुला, और आप अब पिटाई के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है। तो अभी मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे ओपन द विंडो बेयर इन्फिनेटिव है विदाउट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद टू हो जाएगा, है ना? नहीं, आई हैव सेड इनकरेक्ट। यस मैम, कैसे? मैंने क्या बोला? यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव है।
लेकिन यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई किसी को कहता है ओपन द विंडो, दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग, तो अगर मैंने सिर्फ ये सेंटेंस लिखा है तो मैं किसको कह रही हूँ? यू को कह रही हूँ। यू तो हिडन है। यस और नो? तो जब मैंने यू को कहा तो मैं यू अगर लगाऊंगी तभी तो सेंटेंस विल साउंड परफेक्ट देन। अगर मैंने बोल दिया कि ये बेयर इन्फिनेटिव है ना, तो बेयर इन्फिनेटिव कैसे होगा भाई? यहाँ पे यू हिडन है, ओके। तो अब जब हमने इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाई, सो ही ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, नाउ इट हैज बिकम एन इन्फिनेटिव। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट देखो, the reporting verbs say changes to reporting verbs like ask, command, warn, order, advise. Who is this? क्या बात है, श्रेयांशी की एंट्री हो रही है और इतने धूम धड़ाके के साथ, है ना? इतने दिनों के बाद वो क्लास में आती हैं और पूरे बाजे गाजे के साथ। बेटा माइक का ध्यान रखना है। So, do you know the meaning of ask? How ask is different from command, how command is different from warn? I hope you people can, like कैन गेस दिस फ्रॉम द सेंटेंस, क्योंकि ये चीज वहां पे लिखे नहीं होंगी। आपको सेंटेंस पढ़ना होगा और आपको अपना दिमाग चलाना होगा कि सेंटेंस पढ़ के व्हाट एम आई गेटिंग, इज इट अ ऑर्डर, इज इट लाइक व्हाट। सो यू नीड टू रीड द एंटायर सेंटेंस, राइट? इस चीज की एक ही दवा है कि आपको अच्छे से पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा बेटा। जल्दीबाजी करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करेंगे। सो द ओल्ड लेडी सेड टू द चाइल्ड, कोई किसी से कह रहा है, be careful at the sea beach, be careful at the sea beach। so यहाँ पे वॉर्न किया जा रहा है ना? है कि नहीं? when there, yes, when at times it happens that during rainy season or maybe in winters, sometimes our, in washroom, the taps of the washroom or maybe the water supply taps, sometimes they get earthing and we feel electric current shocks, mild shocks. Yes or no? Right. So if I have gone inside the washroom area and I have used the water tap, and I felt the moment I touched, I felt that there is some repulsion, there is some electronic effect. I'm feeling some current. So what will I do? I will warn or I will advise? Ankit Swain, it should be warn. It should not be advised. है कि नहीं? Here the life threat is higher in degree. Say many students are not attending class. So I will advise them. First, what should I do? I will first advise them, and if I see that the same thing is being repeated a number of times, so then I will again advise them or I will warn them. This is the usual process. So when तो ये when advice और warn के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? सी बीच है, बच्चे वहां पे जा रहे हैं, तो ओल्ड लेडी ने क्या किया? वॉर्न किया। तो वॉर्न यहाँ पे ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि क्यों क्यों एडवाइस भी तो हो सकता है, लेकिन एडवाइस यहाँ पे ज्यादा सूटेबल नहीं है। तो अगेन आई वुड से डियर, इट इज अ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा लैंग्वेज को पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारे पास एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स आए, ताकि हम कभी कंपेयर कर सके, कभी हम कॉन्ट्रास्ट कर सके।
हम कंपैरिजन भी कब करते हैं? जब हमारे पास प्रीवियस नॉलेज रहती है, हमने कुछ पढ़ा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Now it's almost time. When requests are changed into indirect speech, the reporting verb say changes to. जब कभी हम रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब जो से होगा, दैट विल बी चेंज इनटू रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, प्लेड, इनवाइट and likewise so on, yani ki the list is long. The compeer said to the audience, compeer means somebody who is doing anchoring, who is managing the mic, who is doing MC, EMC double MC means, like you might have seen students who act as anchors on occasional days, Republic Day and a National Day celebration, or maybe in some function somebody is the in charge of the mic. So we call it MC, right? So here the compeer is also a word, and he is on mic in charge. He's on mic and he's addressing to the audience. Please be seated, right? So the compeer requested, है ना? यहाँ पे क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना? Next, the little girl said to her mother, "Please do not punish me." तो यहाँ पे जब आपको दिखाई दे रहा है कि अब देर इज नो होप लेफ्ट, तो भैया वहां पे तो हथियार गिराना ही अच्छा है। तो वहां पे क्या हो जाते हैं बच्चे? उनके पास दूसरा हथियार है ना, अश्रुधारा, टीयर्स है। टीयर्स भी नहीं काम कर रहे हैं, तो चलो भाई प्लेड ही कर लो। अब तो हाथ पैर जोड़ के भैया गिर जाओ शरण में, शायद जान बख्श बख्श दे। माँ बाप है वो तो बख्शेंगे ही, है ना? टीचर्स थोड़े से जानलेवा हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। ऑल राइट, सो आई होप प्लेड का मतलब समझ में आ रहा है आपको। प्लेड क्या है यहाँ पे? यू आर इन डायर नीड ऑफ समथिंग, यू नीड हेल्प बैडली, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट। ईगो दिखाएंगे तो मार खाएंगे, तब तो वैसे भी जान जानी है। ठीक है, तो बेहतर है कि सारे हथियार गिरा करके गिर जाना है चरणों में। दैट इज द प्लेड वन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन सेड टू द ड्राइवर, प्लीज गिव मी अ लिफ्ट। तो यहाँ पे भी आपका रिक्वेस्ट समझ में आ रहा है हमें, राइट? सो हु इज दिस? ओके, ऑल राइट, राइट। So I hope till here you people are clear. Okay, now wait. Next pointer is saying also. Next pointer says, when statements giving advice are changed into indirect speech, the reporting verb say changes into advice, suggest, warn, forbid. Forbid का मतलब समझ लो। Forbid यानी कि prohibition, कोई चीज मना की जा रही है, ठीक है? जैसे कि danger, your entrance is prohibited, this area is out of bounds। क्या मतलब है? कि वहां जाना मना है, yes or no? ठीक है? So I guess it's time now, and I will continue this in my next period. Thank you so much. जय हिंद, जय हिंद।